See, first question of the exercise is there. Find the volume of sphere whose radius is 7 centimeter. So we will write the formula for volume of sphere is equals to 4 by 3 pi r cube, and then we will put the values. So let's put the value. So it will come as 4 by 3 pi means 22 by 7 into r cube means 7 cube. 7 we will multiply 3 times and a unit will come as centimeter cube. So we can cancel ये एक 7 से एक 7 cancel हो जाएगा, तो ये 7 square will be remaining. 7 square कर देंगे तो 49 हो जाएगा. Here we can cancel and the answer will come in decimal point or in fraction. So we will solve. So you will get the answer as 1/4 1/437 integer. It will be 1 by 3 centimeter cube. You can convert into decimal point also. So this will be the first part. Now let's see the second part. In second part again they have given us the radius. So we will write here volume of sphere is equals to directly formula based question 4 by 3 pi r cube. Okay, so we'll put the value. So 4 by 3 pi, they are telling 22 by 7 into r cube means 0.3. 0.3 will come how many times? 3 times. 0.63 into 0.63. Okay, 0.63 into 0.63 into 0.63. We will be writing it 3 times and then our unit will come as meter cube. Now it's very simple to cancel. It's our choice. हम इसमें डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हैं 0.9 से, and then we can directly cancel it by 3. तो 3 ones and it will come 0.3. Now safest way is you can multiply, और अगर decimal में problem है तो you can remove the decimal point down and then you can write the answer. Okay, तो approx में answer will come as 1.05 meter cube. Same way in question 2 they have given us what they have given. They have given us find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. Now find the amount of water displaced, मतलब कितना पानी हटेगा. तो again it will be equal to the volume of that spherical ball. कितना पानी हटेगा, displaced हटेगा, तो वो जो क्वांटिटी जो डिस्प्लेस्ड होगी इज ऑलवेज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो ये वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल. नाउ यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि दे आर टेलिंग डायमीटर मींस दिस आर डायमीटर्स. तो ये डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. तो विल फाइंड रेडियस. रेडियस इज इक्वल्स टू वी नो दैट डायमीटर अपॉन 2. तो रेडियस हो जाएगा अपना 14 centimeter. You can do it half. Now we are in 10th, so we can do directly write the formula. जब हमें ये मालूम पड़ गया है तो we can write the volume of water. तो amount of water displaced किसके बराबर होगा? Amount of water displaced by a solid spherical ball is equals to किसके बराबर होगा? is equal to the volume of ball. is equal to the volume of ball. ठीक है, I have written only V. फॉर्मूला सेम रहेगा. क्या फॉर्मूला रहेगा? 4 by 3 pi r cube. Now we can put the value 4 by 3 into pi मतलब 22 by 7 r cube. हमने r कैलकुलेट कर लिया है. r we are getting
14, so we will do 14 into 14 into 14 and the unit will come as centimeter cube क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है. Now you can cancel easily. 7 1s and 7 यहाँ पे 2s चला जाएगा. नथिंग इज कम्प्लीटली कैंसिल बाय 3. तो आप सबको मल्टीप्लाई करके यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 3. तो आप 3 से डिवाइड करेंगे एंड अगेन आपका फ्रैक्शन में आंसर आएगा. कैन यू सी डाउन, ये वैल्यू पुट कर दी हमने. ओके और यहाँ पे 7 और 14 को कैंसिल कर दिया है. तो हमारा आंसर भी अब आएगा फ्रैक्शन में. ओके it is coming as 11,498 integer 2 by 3 centimeter cube.